NIACL अकाउंट स्ट्रीम 2024 का एग्ज़ाम मेंस वाला 17 नवंबर 2024 को हो चुका है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं अकाउंट्स प्रोफेशनल नॉलेज पार्ट से एंड ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रीम से। फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रीम UIICL का एग्ज़ाम 21 दिसंबर 2024 को होने वाला है। सो आपके पास एक महीना है एंड these type of questions that have come in NIACL accounts will be very helpful for you to understand the type of preparation you need to do. Hello everyone, welcome to iExamP. Prepare 50% faster by embracing the iExamP learning experience. प्लीज़ डोंट फॉरगेट कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ हो। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न था एंड किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। सो NIACL का फेज़ 2 या मेंस का जो एग्ज़ाम था उसमें प्रोफेशनल नॉलेज पार्ट जो आपके अकाउंट से रिलेटेड था वो 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चंस आए हैं इसमें, राइट। सो कोई डिटेल सिलेबस नहीं दिया हुआ था बट जो एक्सपेक्टेड पैटर्न थे अकाउंट्स के क्वेश्चंस, इंश्योरेंस अकाउंटिंग के क्वेश्चंस, कंपनीज एक्ट के क्वेश्चंस, रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस, इंड AS से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो उसी एक्सपेक्टेड लाइंस पे प्रेपरेशन करी थी स्टूडेंट्स ने। एंड एक आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर भी होना था जिसमें एक ऐसे और एक लेटर आपको लिखना था। सो ये आपका मेंस का एग्जाम पैटर्न था NIACL का। लेवल ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो एंड दिस आई एम टॉकिंग प्रोफेशनल नॉलेज विच इज़ अकाउंट्स एंड फाइनेंस, राइट। सो फाइनेंस जो लेवल क्वेश्चंस आए थे वो इजी लेवल थे, बहुत डायरेक्ट, बहुत ही एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में से, बहुत ही बेसिक टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन एबल टू अटेम्प्ट 30+ क्वेश्चंस अकाउंट्स में बहुत ईजिली, राइट। सो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट, बेसिक अकाउंटिंग। बेसिक अकाउंटिंग से आपके डायरेक्ट 4 क्वेश्चंस आए थे एंड ये जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस था बहुत ही मतलब लाइक व्हेन वी स्टार्ट स्टडिंग अकाउंट्स द गोल्डन रूल्स ऑफ एंट्री, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग से 2 डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे थे। वन, व्हाट इज द गोल्डन रूल फॉर एंट्री फॉर अ पर्सनल अकाउंट एंड देन फॉर अ real account. So in personal account, like we know, we debit the receiver, credit the giver. So, and in real account, debit what comes in, credit what goes out. इससे related आपके golden rules के question से बहुत basic question. Then principles of accounting के 2 question पूछे गए थे। Principles of accounting के like you know there are so many concepts and principles like conservatism, कंसिस्टेंसी, मटीरियलिज्म। सो इनसे रिलेटेड आपके 2 डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। देयर वर स्टेटमेंट्स एंड यू हैड टू आइडेंटिफाई विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज बीइंग अप्लाइड ओवर हियर। नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चंस आए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। जैसा वी हैड बीन टॉकिंग इन मेनी ऑफ माई क्लासेस टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चंस आएंगे, आई हैड बीन रिपीटिंग कि बहुत आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको कोई एंट्री करने के लिए नहीं बोला जाएगा। सो दैट वाज स्टेट। 3 डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताया गया था एंड यू हैड टू टेल व्हाट दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिलेट टू, AS3, AS4, AS13। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछे थे, इंड AS नहीं पूछा था। एज आई हैव बीन रिपीटिंग, इंश्योरेंस कंपनी में अभी तक इंड AS अप्लाई नहीं हुए हैं। सो यू हैव टू बैलेंस दैट, राइट। जो की पूछे जाते हैं रेवेन्यू, डेप्रिसिएशन, इन सब से रिलेटेड, सो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए, प्लस विच इंड AS और AS अप्लाइज टू विच पर्टिकुलर topic that you should prepare for, and 3 direct questions came like that. Apart from there were questions related to foreign transaction related, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था और एक रेवेन्यू रिकग्निशन से था जिसमें they had asked something like
which of this, whether cash discount or trade discount का कैसे treatment होता है revenue recognition, should it be included or not. So cash discount कि gross level पे बताया जाता है and cash discount दिखाया जाता है, but trade discount is not shown. Net of trade discount revenue recognize किया जाता है, right? And then there was statement based questions. There were 3-4 statements given related to GAAP, generally accepted accounting principles, Ind AS and IFRS and US GAAP, and you had to identify the correct or the incorrect statement. So there were statements related to these, and again very basic level, not very depth. तो ये बहुत easily doable questions थे. You did not have to be an expert CA to be able to answer. These are basic accounting questions that were asked. Before I move on, let me tell you, iExamB pe we have one of the widest coverage for finance and accounts related exams, whether it is NIACL, where we have seen past success rates in last recruitment cycle, NABARD Finance, NAPFID, lending operations, NICL, UIIC, of course we prepare, UBI, Forex related exams. So I have just taken snapshots of different types of guidance, success stories, topics that we have been doing. SIDBI has now come out with recruitment, where again MBA students are eligible to apply. UIIC Finance, as I said कि ये analysis भी बहुत important होगा. Exim Bank जो मैनेजमेंट ट्रेनी था वो भी इस बार MBA फाइनेंस और CA स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा पेपर आया था, एंड बहुत एक्सपेक्टेड लाइंस पे what we had prepared same paper आया था, right? So a lot of finance accounts based exams, specialization is also what we cover in addition to all the regulatory bodies. iExam is the only channel जहाँ पे आपको सारे regulatory bodies, सारे all India financial institutions से related preparation guidance milti hai, right? So you can check out if you're giving various other exams related to finance stream. Continuing with the professional knowledge questions जो NIACL accounts में आए थे, we had 5 to 6 questions come from ratios. ये calculation based थे, numerical questions had come, but they were again very very simple statement based questions थे. आपको data directly दिया हुआ था and you had to just apply the formula and calculate. Some of the ratios that were asked were current ratio, quick ratio, asset ratio, inventory turnover ratio that had been asked. Then there was another 2 or 3 questions जो based थे एक set of data, आपको balance sheet का कुछ data दिया हुआ था, and based on that you had to calculate the debt equity ratio, proprietary ratio, and there was one more ratio that had to be calculated. So if you recall any of the more questions, please do feel free to write in the comments box. Depreciation से related 3 questions थे, 2 numerical थे. One was based on the written down value method and the other was based on the unit of production method. Simple numericals थे, although numerical थे, but again बहुत direct application था. आपको परसेंटेजेस दी हुई थी, वैल्यू दी हुई थी, आपको सैल्वेज वैल्यू दी हुई थी, एंड आपको बस फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेशन करना था. एंड देयर वाज वन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऑल्सो दैट हैड कम ऑन डेप्रिसिएशन. अदर टॉपिक्स वर शेयर बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, शेयर कैपिटल बेस्ड. अब इसमें भी कोई कैलकुलेशन नहीं करना था, सिंपल टर्मिनोलॉजी रिलेटेड. लाइक हमें पता है कई तरीके की कैपिटल अकाउंट्स में लिखी जाती है बैलेंस शीट में. कैपिटल के बारे में होता है, देखते ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, राइट? सो देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू विच ऑफ देम इज द हाईएस्ट, राइट? सो वो आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल होती है जो मैक्सिमम होती है, राइट? देन देयर वाज वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज टर्म्स, एंड देन देयर वाज वन क्वेश्चन रिलेटेड टू राइट्स इशू क्या होता है. ओके, सो अगेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रिलेटेड टू शेयर्स. Negotiable instruments से 2 question थे, again very very direct, and all these type of questions we have covered in so many discussions, in so many mock tests, so many chapter tests also. Negotiable instruments में they had asked one who receives the money is called what. So हमें पता है वो payee होता है, right? And then there was one question related to when is the liability discharged on a bill, which of the events. So one of the is when you default to present it on time, right? So there's a timeline. So related to that aspect there was one question there, right? So these were the areas and questions that we have been able to locate till now.
इंश्योरेंस अकाउंटिंग से एज सच क्वेश्चंस डायरेक्टली कुछ नहीं ज़्यादा पूछे गए थे, ऑल्दो इंश्योरेंस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे अंडर जनरल अवेयरनेस, बट अकाउंट्स में इंश्योरेंस अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आए थे. कंपनीज एक्ट ऑल्सो वी हैव नॉट गॉट एनी मच डिटेल्स ऑन वेदर देयर वर क्वेश्चंस और नॉट. टिल नाउ वी हैव नॉट फाउंड एनीबडी who is stating that. So if you have given the exam and if you remember, please write in the comments box what more questions had come from the accounts stream. Moving to the descriptive English, right? Descriptive English आपकी final में calculate नहीं होगा, but you have to clear it with minimal marks. So descriptive English में as I told, and similarly UIIC में भी ऐसा ही होने वाला है, right? UIICL exam में भी same will happen. You have to do the descriptive English part. Okay, and which will consist of one essay and one letter. So essay में 250 words essay you had to write. One of the topics that had come was related to the air quality index. So as you can see nowadays, the air quality has been deteriorating, especially in many of the places in the north part of India, northern states, Delhi, NCR. So the question of the air quality was there, the index, and what can be the remedies to improve the air quality. Also, how at a personal level can people tackle with this issue of air quality, right? So that was a topic that had to be written. There was another topic related to insurance sector, and there was another related to finance. Exact question, if you are attempted or written, then please write in the comments. Letter, again, the one letter that had been asked was a letter had to be written to the RTO asking for the refund of the fine that you have paid on a wrongfully towed vehicle. So your vehicle was wrongfully towed, and you had to pay the fine, but it was wrongfully towed, so you're asking for a refund for that fine. So that letter had to be written. So these were your accounts and descriptive English means exam for NIACL 2024. As I stated, if you have any more questions, if you remember, please write in the comments box. And if you are preparing for UIICL from the finance and investment stream, as you can see, this will be a single level exam. इसमें कोई mains नहीं होगा, single level exam है. You will have a professional knowledge part. They have also given a syllabus. Basics of financial accounting, you can see, is a very important topic. Ratios is another important topic जो आपके NICL में भी बहुत पूछा है. IFRS और accounting standards is another. तो ये 3 topic तो NICL में काफ़ी डिटेल में पूछे गए हैं. Apart from this, general insurance accounting, income tax, GST, digital ecosystem. If I talk about UIICL last year, and we have a video of PYP available on our website, on our YouTube channel, if you want to watch it. A lot of questions, 4-5 questions had come from digital ecosystem last time in UIICL exam. So this is an important topic. And then again, company law again had 4-5 questions last time, right? So very important topics that you need to cover, and we are covering all of this in our course related to UIICL finance and investment. There are a lot of practice tests consisting of all the 6 segments of the exam. 200 plus notes, lot of videos for you to watch and learn. There are 7 mock tests in the exact same exam pattern consisting of all the 6 sections, same exam pattern as number of questions and the time allotted for you to practice, and 7 mock tests will be given. In addition to that, 5 mock tests for descriptive English will also be available in the course. And if you attempt them, you will also be checked and given a reply as to your performance in this paper. There are a lot of chapter tests also to practice. There we will do certain doubt sessions for you to clarify before the exam also. And if you reach the interview guidance will also be included. So if you want more details, you can check out the demo on our website or call on this number given on your screen. So that's all. Thank you everyone. Wishing you all the best for all your upcoming exams. Please don't forget to subscribe to the channel to know all the opportunities that keep coming in the government space and for which you can prepare. Thank you and all the best.